तो कुछ हफ्तों पहले मैंने रितेन के साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो देख सकते हो आप। पर जब मैं उसके बारे में रिसर्च कर रहा था, प्रिपेयर कर रहा था क्वेश्चंस बनाने के लिए, आई रियलाइज कि उसके पास इतना कंटेंट है इंटरनेट पर, स्टार्टअप्स के बारे में, ग्रोथ के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। ट्विटर पर है, उस मीडियम पर है, इंस्टाग्राम और अलग 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 जगह पर है। बट आई आई फेल्ट थोड़ा स्कैटर्ड है, पर लाइक इमेंस नॉलेज ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। एंड आई थॉट कि लाइक जो भी उसके बारे में रिसर्च करना चाहता है, या मुझे ही लाइक थ्रू ट्विटर थ्रेड्स, आई शुड have a database to collect everything, every source of it. So I collected every information, every knowledge he shared or he have written or made in a single Notion database. तो वो लिंक नोशन की आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं कर रहा उसके बारे में, उसके लिए मैं। तो इसके बारे में मुझे आइडिया आया एंड्रू कर्बी के एक वीडियो के बारे में, जिधर उसने ऐसे ही नॉवल के बारे में एक डेटाबेस बनाया था उनके सारे नॉलेज के ऊपर। सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक ऑन रिटेन एंड जस्ट ट्राई एक्सपेरिमेंट विद इट। सो या लेट्स गेट टू द वीडियो, द स्क्रीन। Yeah, so this is the database of Riten. तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पर यू कैन लाइक गेट एवरी लाइक अ ब्रीफ अबाउट हु रितेन इज। यहाँ पे उसकी एक वेबसाइट है जो मैंने लिंक करी है। आई विल गेट अबाउट इट अ बिट लेटर। पर लाइक अगर आपको रितेन के बारे में और जानना है तो इधर एक उसकी न्यूज़लेटर का इंट्रोडक्शन लिखा था उसने अपने बारे में, बहुत सी चीजें लाइक बैकग्राउंड और अभी क्या कर रहा है, प्रोफेशनल करियर और वो सब बात की है। एंड अगर आपको फ्यूलर के बारे में जानना है, व्हाट फ्यूलर डज एंड हाउ इट वर्क्स, तो यहाँ पे फ्यूलर के बारे में सारी चीजें हैं। लाइक फ्यूलर की बैक स्टोरी, फ्यूलर प्रूफ ऑफ वर्क कैसे काम करता है, बैक ऑफ द बैक स्टोरी ऑफ इट, अलग अलग उसके यूज केसेस फॉर एंटरप्रेन्योर्स, एडुकेटर्स, फोटोग्राफर, मार्केटर्स। कुछ कुछ अच्छे ब्लॉग्स जो फ्यूलर ने लिखे थे, और जो भी साइड प्रोजेक्ट्स पर जो फ्यूलर काम कर रहा है, दे आर लिंक्ड हियर, सो यू कैन एक्सेस इट हियर। एंड या हियर इज द लिंक लाइक दिस। सो या, और उसने एक इंटरनेट लाइब्रेरी बनाई है, वो मैं कुछ देर बाद आता हूँ। बट लेट्स टॉक अबाउट दिस सेक्शन। सो दिस, तो this first section talks about the content he has created on this first is Twitter threads. तो यहाँ पे उसने जो भी ट्विटर थ्रेड्स लिखे हैं वो मैंने यहाँ पे लिंक किया है। सो ऑल द थ्रेड्स अबाउट ग्रोथ हो गया, कम्युनिटी, एंटरप्रेन्योरशिप और कॉपीराइटिंग, मार्केटिंग, उसके लिंक से यहाँ पे आप ऐसे इसके एक्सेस कर सकते हो। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इसकी ट्वीट्स, उसने जो सिंगल ट्वीट्स लिखे हैं अबाउट शेयरिंग हिज लर्निंग्स फ्रॉम एनी बुक और एनी आर्टिकल, वो यहाँ पे लिंक्ड है। एंड लास्टली इन दिस थ्रेड सेक्शन, जो भी उसने रीट्वीट या रीशेयर किया है, चाहे वो मीडियम पर हो या ट्विटर पर रीट्वीट हो, यहाँ पे वो सारे लिंक्ड हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक दिस लाइन फ्रॉम पिक्चर्स, ये सेकंड वाला। इफ यू क्लिक हियर, इट विल डायरेक्टली गो to this section of Twitter। और यहाँ पे अंशु ने ये ट्वीट लिखा है अबाउट हिज लर्निंग्स ऑन दिस ऑफ दिस पिक्चर सेशन सीजन। और अगर आप इधर भी लाइक जाओगे, लाइक इफ यू वांट टू लर्न अबाउट लेट्स से हाउ टू लेवरेज दिस इंटरनेट, तो इफ यू क्लिक हियर, it will redirect to Twitter and that will open it how to leverage the internet farming. Yeah, you can just scroll, like he has like amazing threads on Twitter as well, so you can check his Twitter also. Just follow him there, and yeah, you will get great insights. And ये ट्विटर थ्रेड्स के बाद
like मीडियम के आर्टिकल्स है इसके. सो आई वुड हैव डायरेक्टली लिंक्ड दिस मीडियम लिंक, पर उसके 2 साल पहले के इतने अच्छे ब्लॉग्स हैं कि लाइक अबाउट ग्रोथ, एंटरप्रेन्योरशिप, हिज बैक स्टोरी मोस्टली, जो आई थिंक बहुत लोग स्क्रोल नहीं करते. लाइक 2020 2019 में इसने लिखा था, जब इसने जस्ट फ्यूलर की इनिशियल डेज में. तो टू मच मनी इज किलिंग, इज टू मच मनी किलिंग स्टार्टअप्स, लेट्स से दिस आर्टिकल. So this is a Medium article he wrote in February 2020. See this one. So people won't scroll that much. He has like 100 more than 100 articles on Medium. तो उसने एक शायद से एक बुक में से या किसी आर्टिकल में से इसने लर्निंग शेयर किया. तो या यू ग्रेट ऑन मीडियम आर्टिकल्स. लेट्स से startup journeys are quite a thing. Let's this one. So yeah, like this is like great, some of his great old articles. यहाँ पे आप access कर सकते हो, like this one. And lastly, his YouTube videos. So he also creates videos on YouTube. So here are a few of his great videos जो आप like directly यूट्यूब में खोलकर इनको देख सकते हो. लाइक वाई राइटिंग इज इम्पोर्टेंट, और वाई कोलैबोरेशन इज इम्पोर्टेंट, उसने अपनी डिजिटल लाइब्रेरी कैसे बनाई, या जो भी सारे वीडियो उसने किए हैं यहाँ पे है. और अभी नेक्स्ट सेक्शन इज अबाउट ऑल द रिटन recommendations. Let's say great people to follow on Twitter. These are some of the great people like he recommends to follow on Twitter. Let's say साहिल लावंग्या. तो अगर आप इधर क्लिक करोगे तो इट विल डायरेक्टेड टू लाइक ट्विटर. मैं इसमें और नाम ऐड करने वाला हूँ. लाइक द रिकमेंडेशंस आर अ बिट लाइक लेस अभी के लिए, क्योंकि मैं अभी ऐड करने वाला हूँ. बट या लैंड चैसल, if you open it here it will open it like this. You can follow him. And yeah, and the next recommendations are like books. Like अगर आप ये लाइब्रेरी देखोगे, लाइक कहा गया, लाइक रिटेन्स लाइब्रेरी. He has his books on like he's a massive reader about and वो पिक्चर आई थिंक बाद में दिखा दो, पर या this is his library in his room. So he has like more than 100 200 books, but here are like his favorite books on different entrepreneurship, growth, and aspiring founders. Like if you want to read his secret on reading new books, यहाँ पे एक मीडियम आर्टिकल हो, देख सकते हो. और like these are the books he recommends to everyone. But and just 10 books about being for an aspiring founder. So yeah, and that were books. Some of his famous like favorite internet writers are linked here. तो जैसे वो he highly suggests reading Paul Graham, because like because of his being a founder of Y Combinator. उसके बहुत सारे अच्छे ब्लॉग्स जो पिछले 10 15 सालों से लिख रहा है आई थिंक. तो आई एम नॉट श्योर बट लाइक एक्सट्रीमली ओल्ड. तो read his articles. Like you can like click here and uh, you can go here and like read his blogs here. So great blogs like 2013 और वैसे शायद बहुत पुराने से दिख रहा है. So yeah, and he has like such recommendations on his favorite YouTube channels, quotes, podcasts. Let's say podcasts, but like here are a few I think music recommendations. But yeah, I'm going to add after taking a few of his recommendations. With like millennial, but yeah, I'm like adding regularly here. But next
if you're an aspiring entrepreneur, this is a one guide to ये toggle जैसा है, like a few books on startups which he recommends, which is Lean Startup, the $100 Startup, yeah, the Startup Playbook. These are all books from Amazon से आप like directly खरीद सकते हैं Amazon Flipkart से, and a few blogs he recommends to follow. तो both the sides of the table, yeah, startup library by Y Combinator, yeah, different blogs on entrepreneurship, and lastly different articles to read on entrepreneurship. And lastly, here are his guest interviews on different places. So yeah, these are a few interviews he has done as a guest. तो या एंड अभी जो मैं ये बात कर रहा था, दिस लिंक, अबाउट दिस लिंक अबाउट रितेन, तो रितेन की एक नोशन वेबसाइट है, लाइक वेरी शेयर्ड व्हाई एंड व्हाट इज प्रूफ ऑफ वर्क, हिज यूट्यूब चैनल, एंड दिस इज लाइक गोल्ड माइन जो लोगों ने अभी तक इतना डिस्कवर किया नहीं है, like about this Fueler think tank. He very shares his learnings from building Fueler. So like last year I think August का ये इसने लिखा है, like see this much content is there on the internet. अभी February चल रहा है, about the last January उसने I think हाँ उसने इतना सब लिखा है, like on his learnings about building Fueler. And since Fueler is a startup, like being a first time founder is like for extremely hard, and अगर आप उससे सीख पाते हो where access to the source or the knowledge is extremely easy, like I was extremely amazed कि like रितेन का इतना सारा content है इस पर internet पर, like the founder's book, like he has written, he's writing some of this like marketing for founders, pricing for founders. You can check this too. And yeah, हाँ मैं इंटरनेट लाइब्रेरी के बारे में बात कर रहा था. So on Twitter उसने एक इंटरनेट लाइब्रेरी बनाई, एक थ्रेड है, मैंने थ्रेड सेक्शन में भी ट्विटर के लिंक किया है, पर यहाँ पे इट्स लाइक ऑल द ब्लॉग्स और आर्टिकल्स ही रेकमेंड सारे यहाँ पे लिंक्ड है, तो आप ये भी देख सकते हो. लाइक if you want a book library, if you have a book library, he has an internet library. So like thinking and writing are two different skills, and being a thinker, and this is the one. So I have this link. So if you want to access it, it's extremely free. और मैंने एक लिंक है, लाइक यहाँ अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, you can like directly paste or click that link and access it like this. So it will show up like this. So yeah, you can change it to black background or dark or white, whatever suits you. So yeah, and you can access it like this, and yeah. And lastly, अगर आपको एक और मैं सजेस्ट करूं, तो I recommend seeing this podcast about fueling your career with proof of work, मेरा और रितेन का podcast. So yeah, also I'll share more about this updates later on, but you can check Riten's handles here, his newsletter, Instagram, Twitter. उसको ट्विटर पर फॉलो करो, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो, एंड कैन चेक माय सोशल्स हियर एज वेल और इन द डिस्क्रिप्शन. सो या दिस वाज योर रिटेन्स डेटाबेस. और अगर आपको किसी के दिमाग के सबसे करीब पहुंचना है, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द सिंपलर एंड easier ways to get towards Riten's mind. In fact,
आई मीन अगर मैं उसको उसके थ्रेड्स या मीडिया में आर्टिकल्स को ही स्टडी करता हूँ, आई लर्न मोस्ट ऑफ हिज mind. So, if you want to get closer to retain, I mean, this might be one of the like easiest ways to like reaching towards Riten's mind about learning entrepreneurship हो गया या startup. Like बहुत ऐसे कम founders या creators होते हैं जो इतना सारा content about they are learning from building first startup is like immense. Like I truly respect Riten कि वो इतना सारा चीजें वो कर रहा है, like along with making a startup, and building a startup is not easy. So yeah, I mean, thank you for watching the video to the end. And if you want to access all the links, जो नवल का एक database था by Andrew, और इसका भी मैं नीचे लिंक कर दूंगा, so you can access it. It's free, and yeah, until next week, I will see you around.